ओके, तो चलिए वी आर बैक। दिस इज़ द वीक नाइन्थ और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 के रिमेनिंग श्लोकस। हमने 56 श्लोकस कवर कर लिए थे, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद 57। स्टार्ट। यस्सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नेक्स्ट श्लोक। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नेक्स्ट श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। नेक्स्ट श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो क्विकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं चार श्लोकस के बारे में। तो ये चारों श्लोकस का में बोला गया है कि द मेन इज टू कंट्रोल योर सेंसेस, ओके, फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इफ यू डोंट कंट्रोल योर सेंसेस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर mind and your emotions, right? So basically this is talking about the characteristics, how things works, right? Now just to explain with a small example, right? I mean, let eyes are your senses, right? Or ears are your senses. Somebody said something, right? Right, and somebody said like something bad words about you, right? So what happens, right? Your one is your sense organ, which is your ears, right? And then it processes and then the emotions are created, okay. So thoughts comes and then from the thoughts the emotion comes, right? So that's how it is, right? So just trying to talk about, right, even if you're thinking the wrong or if you're hearing the wrong words or if you're seeing the wrong things, everything has got an effect on us, okay. Okay, so let's cover the other slokas. श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। नेक्स्ट श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, 62 श्लोक जो मैंने पढ़ा है, और इसके बाद वाला श्लोक भी मेरा फेवरेट है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नेक्स्ट श्लोक। रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो क्विकली चार श्लोकस के बारे में बात करते हैं। तो ये बोला गया है कि जो हमने सेंसेस के बारे में बात की, राइट, अगर आप सेंसेस को किसी में लगाओगे, राइट, ध्याय तो विषयान पुंसः, इफ योर सेंस इज थिंकिंग अबाउट सम सेंस ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, राइट, योर माइंड वुड बी ऑक्यूपाइड बाय दैट एंड देन फ्रॉम देयर द डिजायर्स विल कम, राइट. And if your desires are getting fulfilled or if you are not getting fulfilled, right, so both ways, right, it will either you will have a kind of affinity towards that desire, or if the desires are not fulfilled, then you get kind of anger, frustration kind of feeling, right? So that is what is in this 4 shlokas. Next shlokas. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसु ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नेक्स्ट श्लोक। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न चाभावयत शांति शान्तस्य कुतः सुखम। ठीक है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विमांभसि। ओके, तो अगेन सेट ऑफ 4 श्लोकास में अगेन इसमें बताया गया है कि अगर इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करा जाएगा, ठीक है, then your mind will be focused and your intellect would be washed away, right? I mean, even a small desire or a small negative or kind of a your indulgence into the sense object, okay, can take your mind away or your intellect away. Okay, next shlokas. तस् तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। नेक्स्ट श्लोक। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति कामकामी। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, इसको फिर से एक बार गाऊंगा, इसको पहले फिर से एक बार चैंट करूंगा आप लोगों के लिए। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति सर्वे तद्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति कामकामी। नेक्स्ट श्लोक। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति। तो बेसिकली quickly touching from that one who lives free from the desire, okay, egoism gets a perfect peace, right? I mean, somebody who's thinking that ye maine kiya, right? So all these people who thinks, right, maine kiya, right, and they do have a lot of greed and egoistic, right? So they will not achieve the peace. As simple as that. नेक्स्ट श्लोक। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैतत्त्वयुप नहीं गलत हो गया। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। सो बेसिकली ये श्लोका लास्ट था, तो हम एक वो गा लेंगे। ओ एवरी चैप्टर वंस वी फिनिश विल सिंग दिस। ओम तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इसलिए हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। So basically, right, I mean, quickly to wrap it up about chapter 2 overall, right, Krishna is trying to give a strategy to Arjuna. So there are two strategies which he suggested, right. First is when Arjuna was very depressed, he implemented the strategy of poking his ego and pulling him out of that depression. And then once that strategy worked, right, now once he's centered, right, then Krishna gave him another strategy, saying that just act, don't worry about what you get, what you'll not get out of this, right. And then he talks about various ways where you can understand the senses, right, and the nature of your senses as well as the nature of your mind. Once you understand the nature of your sense and of your mind, it would be very easy for anybody to have control over them, right.
And that is what it is all about. If you have control your mind, right, and your senses, right, and if you understand, if you have to make control over that, right, of your thoughts and emotions, right, thoughts, emotions or feelings, whatever you want to call it as, right, so you need to know what are those natures, right, and how you can control over them. Okay, so that's all. I think we have covered everything. Thanks for being with me, guys. Take care. Bye bye, and we'll meet for the third chapter.